Namaskar, good evening. You're watching Nation Wants to Know and I'm Swati Joshi. Amid raging politics over Aurangzeb, now a showdown is being witnessed in Uttar Pradesh over the annual Neja Mela, which is organized in parts of Sambhal. Now, this Mela has traditionally been held a week after Holi celebrations to commemorate Sayyid Salar Masood Ghazi, the nephew of foreign invader Mahmood Ghaznavi. However, this year the Yogi government has denied permission for the annual fair. Police in Sambhal has declined permission, citing public objections over the fair organized in memory of a person said to have been involved in the loot of Somnath temple. Remember, as per historical records, Ghaznavi attacked India 17 times and also attacked many big temples, including Somnath temple in Gujarat. When the Turkish ruler raided the Somnath temple in 1025 CE, he was reportedly accompanied by Masood Ghazi at that time. The Yogi government has made it clear that no fair will be allowed in the memory of someone who invaded and looted the country. दुख इस बात का है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से सरकार के इस फैसले का विरोध हो रहा है। समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस फैसले का विरोध किया है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जो लोग कभी राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर के स्मारक पर नहीं गए होंगे, मंदिरों पर नहीं गए होंगे, कभी सम्मान का एक माला नहीं पहनाए होंगे, वही लोग सैयद सलार मसूद, जो एक विदेशी था, आक्रांता था, भारत को लूटने आया था, उसके पक्ष में खड़े हो रहे हैं। आपका जमीर कहां है? आपको एक बार विचार करना चाहिए कि आप कहां पे खड़े हैं। Now, with the cops denying the permission, emphasizing that Masood Ghazi was responsible for large-scale atrocities in India, including the looting of the Somnath temple, the Samajwadi Party has slammed the denial of permission for the annual Mela, accusing the state government of not showing equal respect to all faiths. Akhilesh Yadav asked, if the state government can promote Kumbh Mela, why permission is not being granted for other Melas? ये भारतीय जनता पार्टी हर मिली जुली संस्कृति, हर भाईचारे को और जो हमारे आपस के एक दूसरे के सम्मान करने का तरीका, जो रहने का तरीका है, जहां पर हम एक दूसरे से मिलते हैं, ये मेले क्या होते हैं जहां हम सब धर्म जाति के लोगों को मिलते हैं। अगर वो कुंभ की तारीफ कर सकते हैं तो किसी मेले और की तारीफ क्यों नहीं कर सकते? तो ये जो संस्कृति है हमारी के मेले होते थे, कार्यक्रम होते थे, आयोजन होते थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर के जो रहते थे, वो भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं। आरएसएस ने आज अपनी बैठक में साफ साफ पूरे देश को बता दिया है कि जो औरंगजेब का या इस तरह का जो मुद्दा है, ये रीजनेबल इश्यूज नहीं है और ये डिस्कस नहीं होने चाहिए। अब सलार गाजी को लेकर जो बात हो रही है, चलिए आप फर्ज करें हमारे देश में, हमारे उत्तर प्रदेश में करोड़ों ऐसे लोग हैं जो भगवान परशुराम को मानते हैं और करोड़ों क्षत्रिय भाई हमारे हैं। हमारे जैसे मुसलमान तो क्षत्रिय भाइयों से भी उतना ही प्यार करते हैं। अब मान लीजिए कल क्षत्रिय समाज खड़ा हो, कहे कि हम परशुराम जयंती नहीं मनाने देंगे। इस सरकार का काम है कि उत्तर प्रदेश का विकास हो, डेवलपमेंट हो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों का क्या काम है, विधायकों का क्या काम है, सरकार का क्या काम है? केवल हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, किस तरीके से औरंगजेब पे चर्चा हो, मजार पे चर्चा हो, बेरोजगारी पे चर्चा नहीं होनी चाहिए, महंगाई पे चर्चा नहीं होनी चाहिए, किसानों की आय पे चर्चा नहीं होनी चाहिए, छुट्टा जानवरों से हो रही मौतों पे, फसल को चढ़ जाने पे चर्चा नहीं होनी चाहिए, नौजवानों पे लाठी चलने पे चर्चा नहीं होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश की बिगड़ी हुई, पटरी से उतरी हुई कानून व्यवस्था पे चर्चा नहीं होनी चाहिए। चर्चा होनी चाहिए हिंदू मुसलमान पे, मेले पे, मंदिर मस्जिद पे। तो समाजवादी पार्टी समझती है ये भाजपा का चरित्र है। लोकसभा चुनाव में जब से उत्तर प्रदेश में हारी है, पीडीए की ताकत बढ़ी है, भाजपा में बेचैनी बढ़ी है। Now that the state has denied permission for the Neja Mela, permission is being sought to hold one in the name of a Sadbhavna Mela. And this Sadbhavna Mela was held in 2023 as well. Amid these developments, the UP Chief Minister also made a significant statement. He says glorification of invaders amounts to treason and says India will never accept this. आक्रांता का महिमा बंटन का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना और स्वतंत्र भारत ऐसे किसी देशद्रोही को
आक्रांताओं ने भारत की सनातन संस्कृति को रौंदने का कार्य किया था, बाहर बेटियों की इज्जत पर हाथ डालने का काम किया था, हमारी आस्था पर प्रहार किया था, उसे आज का ये नया भारत स्वीकार करने को कतई तैयार नहीं है। But viewers, what do you think about this debate? This is our question that we are asking, and register your vote. Tell us what is your view on this. This is the question. Should such events that glorify the invaders be allowed? You can cast your vote at Times Now on social media platform X. Register your vote and tell us what is your view on the ongoing controversy. Let's now open up the debate and go across to our guests. We are joined by Anila Singh of the Bharatiya Janata Party. She is the spokesperson of BJP. We have Rohit Agarwal, spokesperson of the RLD. We're also joined by Asif Ansari, political analyst. Pooja Mishra is with us, national spokesperson of the Samajwadi Party. And we have Dr. Sudha Mishra of the Congress. Thank you very much for joining us, Pooja. Let me begin with you. Is there no difference between the Mahakumbh Mela and the Neja Mela? Why are parallels being drawn between Mahakumbh and Neja? Swati, the thing is that both the things symbolizes the religious faith. The Naja Mela has the religious faith of Muslim. The Kumbh Mela has the religious faith of Hindu. So it's the discussion about religious faith. Talking about the law and order, I think there should be a discussion that is police allowed to rename a Mela? We know that India is a democratic country, and the democratic in our country, the democratic country, government is for the people, of the people, and by the people. Is this police people, okay, the civil servant who has forgotten their job? Their job is to maintain the law and order. Their job is to protect the right of each and everyone. And the police from Sambals are behaving as if they are Pooja, Mahakumbh is a religious congregation. Mahakumbh is a religious congregation. It is about the Astha. Whereas the Neja Mela, and correct people if they are wrong, isn't the Neja Mela organized to commemorate Salar Ghazi, an invader? Or is it organized? Is it organized for the Lord, for the God? Whether it is organized for the Lord, whether it is organized for the God, is not the matter. No, there's no difference between a religious congregation and an event that is being organized to commemorate an invader. Is there no difference? No, you can't just नहीं, बिल्कुल नहीं. हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? I'm just pointing it out. We are talking about the faith of people. नहीं, आप कह रहे हैं कि महाकुंभ में और एक ऐसा मेला जो कि एक आक्रांता या इन्वेडर को ग्लोरीफाई करने के लिए आयोजित किया जा रहा है, उसमें कोई फर्क नहीं है? No, that was it glorifying the invader? How it is glorifying? So if there is an event to commemorate somebody, that means it is to glorify that individual. No, it's a mela. It's a mela. It's gonna enhance the economy. It's a faith of Muslims. Then don't draw parallels between this mela and Mahakumbh. The police just question the government on the basis of why permission is being denied. Then why are you bringing in Mahakumbh in the picture? Why it's the faith of one party is protected. The faith of other parties should be also protected. Faith of each and every. Okay, let me bring in Anila Singh. Anila Singh, the allegation is that your government wants to only take care of faith of some individuals belonging to only a particular community, whereas you're ignoring everyone else's faith and their right. Respond. My Ram to all. Difference in between Akhilesh Yadav and Yogi Adityanath ji is that Akhilesh Yadav is halal Hindu and Yogi Adityanath ji is Sanatan Hindu. This is the basic difference. So the political parties like Samajwadi Party, like Congress Party, all 99% of the political parties in great Bharat of us, they are somehow halal Hindus. They have certified themselves. What do you mean by that term? You can like. Why are you using that term? What is the meaning of that term? I will tell you. Halal Hindu means that they have certified themselves that Muslims, we are just according to your Sharia law. And you can use us. Anila Singh, let's not in exchange. Sorry. Let's not tag people. Let's not tag people. Let's not tag people and do this name calling. Can you just respond to the criticism? Can you just respond to the criticism? Because this Mela was organized in 2023 as well, as Sadbhavna Mela is the argument of the opposition. Then what is the problem all of a sudden? See, I am going to tag the name because when they
tag the name of my chief minister, my prime minister, I'm not going to spare them. And the reality is that they are halal Hindus. Secondly, you cannot compare Kumbh Mela with the Mela, with the Urs. They organize Urs in the name of Salar Mahmood Ghazni. Okay, let's stay on the debate. I will not allow any name calling. No name calling. So this, they instead of Mela, Urs is organized. What is Urs? It is a holy Mela. And holy Mela in the name of this cruel person who killed lakhs of Hindus, who looted and plundered our temples. They are organizing Urs in his name. Okay. And then Akhilesh Yadav compares him and this Mela, Urs Mela, with Kumbh Mela. Okay, let me bring in Sudha Mishra. Dr. Sudha Mishra, the Chief Minister of Uttar Pradesh, has said that the invaders will not be glorified, and anybody who backs the invaders, we will not tolerate that. Respond, please. स्वाति जी, फिर तो पूरे जो अंग्रेजी में बोलने वाले लोग हैं उनकी तो सब कुछ खतरे में होना चाहिए, क्योंकि मुगलों के बाद अंग्रेज आए थे और अंग्रेजों ने हिंदुओं की आस्था पे सब पे बहुत प्रहार किया था. हटाइए ना, इतनी हिम्मत किसी में होगी नहीं. ये जानबूझ के हिंदू मुस्लिम करके अपनी राजनीति को पकाने वाले लोग. और सबसे पहले आपके इस चैनल में आपके होते हुए जिस तरह से अनिला जी ने शब्दों का प्रयोग किया हलाल हिंदू, मैं इस शब्द के लिए इनसे जरूर मैंने उस पर आक्षेप लिया और मैंने कहा कि नेम कॉलिंग नहीं होगी. किसी को भी टैग मत कीजिए. इस तरह की नेम कॉलिंग नहीं होगी. उस पर मैंने पहले ही इंटरवीन कर दिया है, अपनी बात रख दी है. उससे आगे बढ़ते हैं. नहीं करूंगी. अनिला सिंह हो या कोई भी हो चैनल में बैठा हुआ, वो ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता है. If you did not hear me, I intervened right when that term was used, and I have requested Anila Singh and everybody on the panel to stay away from name calling. नहीं, मैंने आपको, मैम सुनिए, मैम सुन लीजिए, ठीक है. इसके अलावा इस देश में संविधान नाम की कोई चीज है कि नहीं, जिसमें हिंदू मुस्लिम नहीं, सभी और सबके लिए सब कुछ संविधान के अकॉर्डिंगली है. उसके बावजूद ये लोग बैठ के इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं. आप बताइए मुझे, अगर मुगल आक्रांताओं ने इस देश के लिए बुरा किया तो अंग्रेजों ने क्या किया था? अंग्रेजी क्यों बोली जा रही है? अंग्रेजी को आगे क्यों बढ़ाया जा रहा है? विदेशियों से हम व्यापार क्यों कर रहे हैं? आप एक अलग लैंग्वेज वॉर छेड़ रही है. जो मुद्दा है उस पर रहिए, एक अलग लैंग्वेज वॉर मत छेड़िए. सुधा मिश्रा जी, आप बताइए, आपके हिसाब से महाकुंभ और नेजा मेला में कोई फर्क नहीं है? पूर्वजों के साथ पूछिए ना. ये 70, सुनिए नहीं स्वाति जी, मैं कुंभ की बात तब करूंगी जब मैं इस समय जान पाऊं कि मेरे साथ 70 वर्षों में जिन अंग्रेजों ने, जिन आक्रांताओं ने देश को लूटा, उनसे बदला लीजिए ना. चलिए लेते हैं बदला. नहीं ले पाएंगे. बदला है, परमिशन ना देना बदला है. रोहित अग्रवाल, आप लोग बदला ले रहे हैं. भड़काना, मैं कह तो रही हूँ. रोहित अग्रवाल, आप लोग बदला ले रहे हैं. नहीं, बदला नहीं, चलिए लेते हैं. Tomorrow somebody will come, I think, please ask. Tomorrow somebody will come and ask a permission in the name of Jinnah. So do Samajwadi Party will say, please give the permission. Tomorrow somebody will come and ask the permission in the name of Nathuram Godse. So should we give the permission to them also? In the same way, how can we give a permission in the name of Mughals who have looted the country, who have destroyed the country, who have destroyed the culture of the country? And rightly, Sudha Mishra, I am with you. I am with you. अंग्रेजों के साथ हमें किसी को सिंपैथी नहीं है. और दूसरी चीज, मुझे तो शर्म आ रही है इस बात को समझते हुए कि अंग्रेजों की भाषा अंग्रेजी है, ऐसा आप पढ़ी लिखी व्यक्ति होके आप कह रही हैं. इंग्लिश इज अ इंटरनेशनल लैंग्वेज. दैट इज नॉट अ लैंग्वेज फॉर द. सुधा मिश्रा, 1 सेकंड मैम, 1 सेकंड. अलाउ अदर्स टू स्पीक. आप कंटिन्यूअसली मत बोलिए. Allow others to speak. I'll come to you for a counter. Pooja Mishra, the government of Uttar Pradesh has denied permission, saying we won't allow invaders to be glorified. तो उसमें रिलीजन क्यों बीच में लाया जा रहा है, और कौन रिलीजन बीच में लेकर के आ रहा है? इन्वेडर्स के साथ कोई एसोसिएट अफिलिएट क्यों करना चाहता है? अगर उन्होंने देश को लूटा और अगर अट्रॉसिटीज कमिट की तो वो सबके खिलाफ की. How many did he come? How many times did he come? I'm talking about the nephew who's a member. अगर आपके अकॉर्डिंग जा रही हूँ तो मैं, did you know how many times he came? How many times he invaded India? Do you know that this faith, the Muslim has their faith, they has been organizing this mela, and how the people who was speaking before me,
And he said that how we gonna give the permission the way you gave the permission in 2017, the way you gave the permission in 2018, the way you gave the permission in 2019, the way you gave the permission in 2022, the way you gave permission in 2023, the way you gave permission in 2024. Now also you need to give that way permission. And don't you concern the police of Sambhal are indulged into pleasing the government, pleasing the chief minister. Instead of taking their responsibility, they're now saying Okay, Rohit Agarwal, come in. It has been organized in the past. It has been organized in the past, so why is there a problem all of a sudden? How come all of a sudden there's a law and order situation? If some mistake is done in the past and we want to correct that mistake, so do you think we should not correct any mistake? अगर कोई गलती हुई है पीछे तो उसको तो सही करने का तो हक है ना, सरकार का तो यही काम है कि उन गलतियों को दूर करें हम। आप नेजा मेला से मुसलमानों को मत जोड़िए। हिंदुस्तान के मुसलमानों का कोई इंटरेस्ट नहीं है नेजा मेला में। कुछ ग्रुप ऑफ पीपल है समाजवादी पार्टी के जो इनके बिजली चोर सांसद हैं, संभल के सांसद के घर से बिजली चोरी करते हुए पकड़े गए थे। वो लोग हैं जो नेजा मेला के नाम पे वहां पे भावनाओं को भड़काना चाहते हैं। They want to make the Mughals die again. Okay, both Pooja and Sudha Mishra want to come in. I want to go across to Sudha Mishra. The allegation is that this is nothing but, one second, this is nothing but an opportunity that some people see in claiming passions. लोगों को भड़काने के लिए इसको एक opportunity के तौर पर देखा जा रहा है, इसलिए जानबूझकर के religion का angle inject किया जा रहा है। सुधा मिश्रा, आपका क्वेश्चन मुझसे है? जी, अभी रोहित जी ने कहा ना कि जो पिछले काम गलत किए गए, मतलब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पिछले कई वर्षों से गलत काम करती आ रही थी, इन्होंने इस बात को माना। दूसरा, जब भी मैं कहती हूं कि ऐसे मुद्दों पे चर्चा हो ना, तो आज की घटना को मैं जरूर स्वाति जी आपके थ्रू, क्योंकि आप भी लड़की हैं मैं भी लड़की हूं, अगर हमारे परिवहन वो सेफ नहीं है और इस देश की बेटियां गाड़ी से उतरने के बाद उनका रेप होता है, मर्डर हो जाता है, तो हमें प्रश्न पूछना चाहिए। रिलीजियस ले आइए, आप लोग सब कुछ लाइए, मेले के लिए कौन लूटा रहा, किसने वेंडर दिया, किसको नहीं दिया, इससे हमें क्या मिलने वाला है? अगर कुंभ मेला आप देते हैं हिंदुओं के लिए, तो आप मुस्लिमों के हक की जो लड़ाइयां जो आपने किया है, हक में दिया है, उसको देने में ऐतराज क्यों है? इसका मतलब आप आज गलत कर रहे हैं, आप पिछले कम कर रहे थे। सुधा मिश्रा, एक बात मुझे गलत नहीं था तो ये गलत है। सुधा मिश्रा जी, फिर एक बात आप बताइए कि पुलिस ने परमिशन डिनाई की, स्टेट ने परमिशन डिनाई की, इसमें यह कह करके कि एक समुदाय विशेष का हक आप छीन रहे हैं, पॉलिटिसाइज कौन कर रहा है? पुलिस इज रेडी टू गिव द परमिशन। No, one second. मिल रही थी। One second. Allow Sudha Mishra to please come in. Allow her to come in, please. Rohit, 1 second. मैं आपके पास आऊंगी। कहने की जरूरत नहीं है। जानबूझ के इस देश के मुद्दों से भटकाने के लिए ये सरकार, इसके लोग ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। Please, Anila Singh, respond. कि इस देश ये एक अटेम्प्ट है, दिस इज एन अटेम्प्ट टू डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम रियल इश्यूज। आप आज के मुद्दों पर बात नहीं करना चाहते, इसीलिए बार बार ये हिंदू मुस्लिम का मुद्दा आप लोग उठाते हैं फॉर पॉलिटिकल गेन्स। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड, अनिला सिंह? See, they have to come up with some new statements. People are bored. They do not accept such statements. They keep on saying this thing. अरे ये मुद्दों से भटकाना चाहते हैं, मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। भटक तो आप गए. That is why you are out of power. We are in power. People have got trust and faith. And you keep on hyperventilating. मेला नहीं होने वाला, बिल्कुल नहीं होगा, परमिशन नहीं मिलने वाली है। We have been correct, like whether we talk about the central government or whether we talk about the state governments, इतनी मिस्टेक्स की है इन्होंने, इतनी मिस्टेक्स की हैं, हम उसको करेक्ट कर रहे हैं और अभी 1 or 2% mistakes have been corrected. So many mistakes have to be corrected. Okay, we also have Asif Ansari. I think he's finally through with us. Asif Ansari, there was some network issue because of which हम आपसे पहले connect नहीं कर पाए थे, but now you are back into the debate with us. Asif Ansari, one side is saying that this is nothing but politicization of the issue. Opposition के पास कोई नया मुद्दा बचा नहीं है, इसीलिए बार बार बीजेपी पर एक ही एलिगेशन लगता है। और ऑपोजिशन, आई डोंट नो आपका व्यू क्या है, लेकिन ऑपोजिशन का ये कहना है कि ये एक समुदाय विशेष का हक छीनने की कोशिश है। इफ यू कैन ऑर्गेनाइज महाकुंभ, व्हाई यू नॉट गिविंग परमिशन फॉर द मेला? What is happening? Who's playing with emotions, Asif Ansari, and who is doing vote bank or appeasement politics? Well, Swati, good evening to everyone. Yes, we are having some network issue, but as the issue has come up, before I just start, I think this BJP government who is really fragmenting the national harmony. You will see that a couple of days before, when the Holi was about to happen, the CEO of the Sambhal has said so undemocratic issues, and the statement which was
was giving, and there was a whole country who criticized about that undemocratic comment. Secondly, you will see that the masjid, the mosque were covered by the tarpaulin. And It was the such an mosque committee unprecedented. members, Asif Ansari, cooperated with the police. Yeah, they were. Did that happen for the first time? Unprecedented. It was unprecedented. It was never happened. So will you before. also laud the Yogi government for taking everybody together and ensuring that the Holi and the Friday prayers happened peacefully? Let me finish my point. Let me finish my point that when it is been covered, why it has been covered? Because the UP government failed to deliver, and it was incompetent to maintain the law and order, because they are covering the masjid. They don't have a police So you'd personnel rather who can- allow. So you'd rather allow the procession to take place. You'd rather allow a situation to come up, situation to crop up, and for passions to be inflamed. Why not? Why not? Why not? Why not? One The second, other Asif community Ansari ji, also tell me could do. something. Why Tell me not? something. Why If there not? was really a problem, then why did the mosque committee members not object and say we will not cover the masjid? It is because the apprehension, because of the apprehension. Because of the apprehension of the violence, it has been seen the police were not cooperative with the people. The cops on record, Asif Ansari, have said this is not a new practice. The cops on record have said, and we also have Rohit Agarwal, on record the cops went on to say, Rohit Agarwal, it's not a new practice, it's been happening in the past. And the committee members are cooperating with them. देखिए अपोजिशन को प्रॉब्लम यही है कि होली और फ्राइडे की प्रेयर्स एक साथ कैसे पीसफुली निपट गई, यही तो इनको प्रॉब्लम है। और एक बात बताइए, प्रशासन ने किसी मेला के लिए डिनाई नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि जस्ट चेंज द नेम फ्रॉम नेजा मेला टू सद्भावना मेला, एंड दे आर नॉट रेडी टू चेंज द नेम. They want to conduct a mela in the name of Mughals. And Prashashan is saying you can have the mela, but you have to change the name. Pooja You Mishra. cannot have it Pooja in the Mishra, name. respond. There is no problem with people celebrating. There is no problem with traditional practices continuing. No problem with the mela and participation. There's a problem with glorification of invaders. Now, there is a problem with the name of the mela, and that too with the police. Rule of police conduct don't give them right to say that they have to change the name of mela so that they have the right, or they have the right only to say that whether they will be able to provide the security, whether they will be able to manage that mela or not. They don't have right to change the name of a mela. They don't have that right. They are the civil servant, not the representative. They are not You're the member saying of there's no parliament. problem They with can't glorifying change the name of invaders. Is that what you're saying? Before I wrap up very quickly, are you saying there's no problem in glorifying invaders? No, I'm not saying that. Why don't you ask the So then why are you Gujarat- saying there is no need to change the name? Why don't they speak out something? Of course, if the committee doesn't want, is it the job of police to change the name of a mela? This is very interesting. Is So this- does it come under the right when of the police? mosques are covered and the masjid committee members cooperate with the police, people like Asif Ansari would say because there are apprehensions, because they are worried, because they feel that this could inflame passions, and that's why they were forced to cover the masjids. And then when, it's about glorifying invaders, you're saying why should they change the name? I'm completely out of time. Anila Singh, Sudha Mishra, Pooja Mishra, Rohit Agarwal and Asif Ansari, thank you very much for joining us on the broadcast. Thank you for your time. It's now time to reveal the results of the poll. This is the question we asked: should events that glorify invaders be allowed? And 9.3% people say yes, such events should be allowed, whereas 90.7% people believe such events that glorify invaders should not be allowed. With that, we are wrapping up this edition of Nation Wants to Know. Very quick break, lot more lined up for you on the other side.